आप सब ने हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? थायराइड डिस्फंक्शन का हमारे ब्लड शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना एंड इन टुडेज एपिसोड वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन hypothyroidism and diabetes. Hello doctor, welcome to our show today that is Beyond the Pill, and we feel really good to have you with us today. How do you feel being on the show? Thank you, Dr. Chetna, for giving me this opportunity to inviting me to this show. It's really my pleasure. Well, I always wanted to be a doctor. It was my childhood dream because I had seen my family members being doctor, so I wanted to serve. And after doing my MD medicine, I wanted to choose a DM career where I will have a perfect balance between doing research work, doing clinical clinical work, and also educating. So I wanted to choose a subject where I can think out of the box. So I chose DM endocrinology, and currently I am working as an assistant professor in IMS Some Hospital. Oh, that's interesting. So, knowing you that endocrinologist जो है that is more like जो भी hormonal conditions है, you deal with those patients, right? Yeah, we deal with hormone, obesity and metabolism. So we all know कि ये जो डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म है ये तो हर किसी दूसरे इंसान में आजकल होता ही है. So what kind of patients do you see and how many patients do you see who are suffering from these conditions? Diabetes and hypothyroidism is just like bread and butter for our department. So we usually see diabetic patients and hypothyroidism more commonly, but apart from that, other conditions which we usually see is short stature, delayed puberty, puberty related disorders, and also growth hormone related disorders. Correct. So in this patients जो आप देखते हो जिसमें डायबिटीज़ या हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, तो क्या ऐसे क्लासिक केसेस होते हैं जिसमें दोनों भी कंडीशंस है? Yeah, so actually diabetes and hypothyroidism, these are two different diseases, but they usually have a coexistent nature, Right. because they affect each other. Like in type 2 diabetes patient, various studies they have shown there is a prevalence of 6 to 20% in type 2 diabetes to develop hypothyroidism, and also hypothyroidism in type 2 diabetes is more common as compared to the normal population. Okay, we have another type of diabetes like type 1 diabetes, where there is association of autoimmune thyroid diseases like 15 to 30%. Okay. So yes, they are have a coexistent nature, and they each other affect the course of the management treatment जो Okay. बोलते हैं हाँ, the management. correct, हाँ. तो क्या हम बहुत सिंपल टर्म्स में कैन वी अंडरस्टैंड कि ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, हाउ डज इट इम्पैक्ट द ब्लड शुगर लेवल और द डायबिटीज़? या हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स. तो एक्चुअली थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं T3 T4 हार्मोन्स प्लस TSH जो T3 T4 को रेगुलेट करता है. सो थायराइड हार्मोन्स का इम्पैक्ट है कि वो हमारे लीवर से जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाता है, कमाता है. इंसुलिन का सिक्रेशन जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं उससे कमाता है, बढ़ाता है. तो हाइपोथायरॉइडिज्म में एक्चुअली देयर इज डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज. सो थायराइड हार्मोन्स एक्चुअली अफेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ऑलराइट. तो इनके क्लासिक सिम्टम्स क्या होते होंगे? लाइक आई फील दैट आपके पेशेंट्स जो भी आपके पास आते होंगे उनके पास यही बड़ा सवाल होता होगा कि कैसे पता लगाए कि मुझे डायबिटीज़ भी है और हाइपोथायराइडिज्म भी है? यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं लाइक डायबिटीज़ पेशेंट आते हैं, तो जनरली जो लोग पेशेंट ओल्डर देन 65 एज, फीमेल, ओबीज होते हैं, तो उनमें हम थायराइड टेस्ट करते हैं रूटीनली, लाइक वंस कर लेते हैं. अगर वो लोग सिम्टम्स बोलते हैं जैसे कि वेट गेन हुआ, वज़न बढ़ा, हेयर लॉस या फिर लेथार्जिक फील करना, तो उनमें हम टेस्ट करते हैं. करेक्ट. एंड देन दोनों का जो भी डायग्नोसिस पार्ट है या स्क्रीनिंग पार्ट है वो अलग अलग है या इट्स द सेम? नहीं, दोनों का स्क्रीनिंग पार्ट डिफरेंट है. लाइक हम लोग डायबिटीज़ 2 टाइप्स के हैं, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 यूजुअली, मतलब और अदर टाइप्स भी हैं बट टाइप 1 एंड टाइप 2. सो टाइप 1 में देयर आर गाइडलाइंस कि यू हैव टू टेस्ट फॉर TFT एवरी 1 to 2 years एंड anti-TPO एंटीबॉडीज़ अगर सिम्टम्स आए तो. टाइप 2 डायबिटीज़ में यूजुअली हम लोग जो लोग फीमेल्स होते हैं, ओबीज होते हैं, एज मोर देन 65,
उन लोगों में या फिर उनका TPO एंटीबॉडी कहीं पे करवाया हो पॉजिटिव होता है, उनमें वी यूजुअली टेस्ट। तो ऐसे कौन सी वार्निंग साइन है जो यूजुअली पीपल शुड बी अवेयर ऑफ कि नाउ दिस इज़ द साइन दैट आई नीड टू मीट द डॉक्टर एंड गेट माय थायराइड और डायबिटीज़ चेक? या थायराइड लेवल्स, थायराइड टेस्ट करवाने के लिए यूजुअली आपको सिम्टम्स फीमेल्स में आता है कि दे हैव रिप्रोडक्टिव इश्यूज, मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होते हैं, वज़न का बढ़ना, वेट गेन, और ज़्यादा थकान, लेथर्जी जो हम बोलते हैं, ये सब सिम्टम्स यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में दे यूजुअली हैव इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट लॉस, ओके, ज़्यादा पेशाब जाना, ठीक है, और थकान, लेथर्जी दोनों में होगा। बट इनमें डायबिटिक पेशेंट्स में देयर विल बी इंक्रीज एपेटाइट, खाना बहुत खाएंगे पर वज़न कम हो जाएगा। ओके, एंड लो ब्लड शुगर लेवल्स के सिम्टम्स? लो ब्लड शुगर लेवल के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर यूजुअली हाइपोग्लाइसेमिया, अगर हम डायबिटिक पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट रखते हैं तो उनको हम ऑलरेडी प्रिकॉशंस देते हैं, कि चेतावनी देते हैं कि अगर कभी आपको ज़्यादा भूख लगे, ज़्यादा स्वेटिंग हो, हाथ कांपने लगे, डिजीनेस या वो सारे चीज़ें हो, देन दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। सो उस टाइम में हम उनको बोलते हैं कि यू कैन हैव 2 टेबल स्पून ऑफ ग्लूकोज इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर। आइडियली दे शुड चेक इट विथ ग्लूकोमीटर, बट अगर नहीं है देन फॉर इमरजेंसी दे कैन डू दिस। ये जो सिम्टम्स होते हैं थायराइड के, मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं या सेम फॉर बोथ ऑफ देम? नहीं, सिम्टम्स सारे सेम ही होते हैं। और सिम्टम्स जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो होते हैं उसमें वज़न बढ़ता है, उसमें ज़्यादा थकान आती है और हेयर फॉल होता है। अगर फीमेल्स है तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती है। ओके। और डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा है कि उनको भूख ज़्यादा लगती है, वज़न घटता जाता है, ज़्यादा थकान महसूस होता है, बार बार पेशाब जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज़ के होते हैं। करेक्ट। तो जो डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म है, ये यूजुअली जेनेटिकली पास ऑन होता है या देयर इज सम अदर रीज़न टू इट? डायबिटीज़ में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, ठीक है ना, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना करना, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में वो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आयोडीन इनटेक कम लेना, नहीं तो ऑटो इम्यूनिटी, जो लोग मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपोथायराइडिज्म का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारा अपना इम्यूनिटी, दे एक्ट अगेंस्ट आवर ओन सेल, सो ऑटो इम्यूनिटी हमारा मेन कॉज होता है फॉर हाइपोथायराइडिज्म। So if any of the parent is having hypothyroidism or diabetes, या फिर both the parents are having it, so the child need not worry about getting it? नो, एक्चुअली इन डायबिटीज़ जब कोई भी हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जेनेटिक अगर है, फादर मदर दोनों को है, तो 40% चांस होता है डायबिटीज़ होने का। सिमिलरली फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड हो तो उनको ऑटो इम्यून थायराइडिस का फैमिली हिस्ट्री है, तो बहुत चांसेस है कि उनको भी आइदर हाइपो या फिर हाइपरथायराइडिज्म कुछ भी हो सकता है। Okay, so in this case, what can be the preventive measures? Actually, there are no preventive measures because most part are the genetic part. So one thing we can do is early detection Yes. and treatment. That is the only part we can do. And those parents who already know they have the disease of either diabetes or hypothyroidism, so they should initiate, they should come for regular follow up along with their kids, along with themselves, and they get regularly checked. That is very important. So how often should they do their screening for thyroid and diabetes? Actually, for diabetes, we usually have ADA guidelines, which is those people more than 35 years, they can go for checking their blood glucose levels, like fasting plasma glucose and 75 grams post plasma glucose HbA1c. If it comes out to be normal, there is no problem, they are not diabetic or not pre-diabetic, then every 3 years they can go for checking. Okay. And in hypothyroidism, so there are no such guidelines कि we should regularly check, but if you have symptoms, the symptoms which I have already mentioned, if you have any of these symptoms, you can go for a FT3, FT4, TSH, TFT values. You can check TFT values, and at 1 or 2 yearly in patients of diabetics we usually do. Okay, so now that we know कि these both the diseases are interconnected, so can they become like a clue for one another
कि हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हो? Actually, we have seen when we routinely follow up the patients of type 2 diabetes, so when they turn out to be hypothyroid, so usually their requirement of insulin or OAD, it goes down Okay, why so? because thyroid hormones are required for adequate secretion of insulin, okay, and adequate hepatic glucose production. So in hypothyroid patient, the insulin secretion actually decreases. So the requirement of giving OAD, these all also decrease. Okay. Once we detect hypothyroidism, we treat them with levothyroxine, then again we need to adjust, like the requirement of insulin and OAD, it increases. So regular follow-up at that time is very much essential. So in such cases, if you are treating the hypothyroidism, automatically the diabetes can become normal? No, the requirement is low, but when we treat the hypothyroidism part, the requirement increases. Okay. Okay, so we have to upgrade, we have to give more doses or more insulin with normalization of this thyroid hypothyroidism. Okay, so the way you are treating hypothyroidism, same way even for diabetes you need some extra intervention, right? Yeah. Okay. So when a patient comes to you and says कि डॉक्टर मुझे थायराइड हो गया है, and then after some time they come to know कि डायबिटीज़ भी हो गया है, so how does it affects their mental state? Yeah, actually most of the patients, both diabetic and hypothyroidism, they're in the denial phase initially. They can't accept that they have a disease and this is a lifelong disease. It is not going to get cured. Good, right. So they usually take the medicines for 2-3 months, and when they feel fine, they stop coming to us. They stop any follow up. Then after 1 year or 2 year, again when they become symptomatic, they come and they ask me why this disease is not being cured, correct. because I had taken my medicine for 3 months as you had advised. So from the day one, we usually counsel them that this is a lifelong disease. You have to live with diabetes or you have to live with hypothyroidism and you have to get treated. Regular follow-up will make your life manageable, and you can do fine. But if you don't adhere to the Correct. follow-up and recommendations by the physician, then you might have some issues like reproductive issues or the complication of diabetes, Right. like neuropathy, nephropathy, retinopathy. So these are the advice we usually give the patient. So are there any mental conditions associated with hypothyroidism or diabetes? Acha, yeah, actually, this is a very good question. So the psychiatric patients, those who are dealing with depression, so usually they need to be checked. Thyroid function test needs to be checked early from before the starting of therapy, because we have seen that many depression patients are actually hypothyroid patients. Oh. They get referred back from psychiatric department with a TSH of 100 usually. Okay. So thyroid function test needs to be evaluated from the day one of any patient suspected to have any psychiatric symptoms. Oh, that's interesting. Yeah. So basically, anyone who's having thyroid can, yeah. I mean, one of my relatives, she's been diagnosed with hypothyroidism. I see her getting a lot of palpitations, a lot of anxiety, a lot of depression. So I feel that thyroid has a big impact on mental state as Yeah, well. it do have. So how do you counsel a patient for that? Actually, these are the symptoms prior to starting of therapy, like these symptoms. With treatment, usually they get better. The patient says, "I feel better, the depression is gone," or whatever. So they feel better with treatment. But then we have to regularly check, like the things you told, like palpitation, anxiety. We need to regularly check the thyroid hormone levels, because if we are over treating the patient might have anxiety or palpitations, tremulousness. So that's why regular follow-up is required. Now both these conditions are such जो lifestyle से होती है. So any tips that you have that a patient can do to manage this condition? Lifestyle modifications जो है, जैसे कि adequate balanced diet, physical exercise, it will help in diabetic patients. Okay, in hypothyroidism, you just need to take your medicines regularly. Okay. So are there any dietary recommendations which can really help to improve your diabetes? Dietary
recommendations? Recommendations. Actually, dietary recommendation is individualized as per each patient. So we usually estimate the daily calorie intake of a person, and we advise to at least 500 to 1000 kilocalorie restriction. मतलब जितना आप खा रहे हैं, like आप खा रहे हैं 3400 3500, at least 500 you decrease, so that will help in 5 to 7% weight loss. Apart from that, physical activity, which is very important, like 30 minutes a day or 150 minutes per week, they should do any activity with no 2 days interval. Okay. And apart from these two factors, sleep is very important, both the duration and the quality of the sleep. Right. So duration, adequate duration, as per now guidelines have come up that 7 hours is fine. Any duration less than 6 hours or more than 9 hours, it increases the incidence of diabetes like to 30 to 40%. आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि there are so many people who do smoking and even intake of alcohol has been increased. So how does it negatively impacts your blood sugar levels and even the thyroid? अल्कोहल के बारे में आपने जो पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली अल्कोहल इंटेक अगर आप ले रहे हैं रेगुलरली, वो हमारे थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम करते हैं. ठीक है. सो विजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग ये अवॉइड करने के लिए. और स्मोकिंग जो है वो हाइपो से ज़्यादा हाइपर थायरॉयडिज्म में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. वो थायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़ाते हैं. ठीक है. तो जो हमारे हाइपर थायरॉयडिज्म जो ग्रेव्स होता है, ग्रेव्स डिजीज़ हम बोलते हैं, उसको एग्जैजर्बेट करते हैं. और उसमें थायराइड आई डिजीज़ जो एसोसिएटेड है विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, उसको एग्रेवेट करते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म में स्मोकिंग का इफेक्ट है कि वो थायराइड हार्मोन लेवल्स कमाते हैं, इवन टीपीओ एंटीबॉडी हमारे कमाते हैं. तो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म का इंसिडेंस कम रहता है, बट दैट डजंट मीन कि वी शुड स्मोक एंड टेक अल्कोहल. सो स्मोकिंग सेसेशन इज एडवाइज्ड. ओके. सो ऐसे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है उसने स्पेसिफिकली कुछ वेजिटेबल्स है या कुछ ऐसे डाइट है जो अवॉइड करनी चाहिए. व्हाट इज़ योर advice on it? This is a very good question, or most commonly asked question in my OPDs. Actually, this is a very good question, and is the most commonly asked question in our OPD. So these patients, they think that some dietary restriction or some dietary additions will help them in this hypothyroidism, but actually diet has no such important role in this hypothyroidism. They need to take the medicine adequate regularly. Yes. And apart from this, they have a misconception that they eat cabbage, that might affect the thyroid hormone levels. But actually, the intake we are having, it will not cause any harmful effects. So we can have any food we want with in the patients of hypothyroidism. They can take any food. Just they have to maintain one thing, that before taking after taking thyroid medications, they should have 1 hour gap. Okay. And what about diabetes? Any specific dietary restrictions? Actually, in diabetes, I have already covered up with the diet. I have told it needs to be individualized according to their own calorie intake, like 500 to 1000 kilocalorie needs to be restricted. From their no daily sugar? Yeah, no sugar, no alcohol as well. no alcohol, no smoking. All right, thank you. Now we'll do a small segment. So the name of the segment is guess the symptom. Okay. तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी. यू हैव टू टेल मी दैट ये जो सिम्टम्स है ये कौन सी कंडीशन से एसोसिएटेड है. ठीक है. ऑल राइट, कैन वी स्टार्ट? या. So very first symptom is a person is feeling usually tired, gaining weight despite eating normally, and notices that there are always, like the person is always feeling cold even in warm weather. So what do you think the symptoms are They are associated with? typical symptoms of hypothyroidism. Okay. Any patient having these symptoms should get their thyroid function test. So next example is कि a person is frequently thirsty, प्यास लगती रहती है, बार बार ही उसको वॉशरूम जाना पड़ता है और टायर्डनेस होती है, fatigue फील होता है, no matter how much sleep they get. So which condition this could be? These are also typical symptoms of diabetes. So anybody having these symptoms, they should get checked.
with fasting plasma glucose and HbA1c. The next one is a person has been managing their diabetes for years, but recently they noticed unexplained weight gain, dry skin, hair thinning. So what could this be? Yeah, they are typical symptoms of hypothyroidism, as I had already told you. So in a diabetic patient, if you find these symptoms, so they need to do their thyroid function test. And meet the doctor immediately. Yeah. So a last example is a person is on medication for diabetes as well as for hypothyroidism, but they are finding it hard to keep their blood sugar levels normal. So what condition this could be? Yeah, actually, as I had discussed before, so in hypothyroidism, with after taking levothyroxine and treating hypothyroidism, there is an increased requirement of insulin or medications. So they need to regularly follow up, and also it needs to be taken care of that thyroid functions are within normal limits. The patient should not have increased thyroid hormone levels, that it because that can also lead to this glycemic derangement. Okay. So they should regularly follow up and do their TFTs and checkup at regular interval. Thank you so much for joining us today on our show and providing us clarity on hypothyroidism as well as diabetes, and also for giving the management strategies for both of them. Thanks a lot. Thank you. And that's a wrap up for today's episode. I hope you're leaving with a deeper understanding of how hypothyroidism and diabetes can be interconnected and why is it important to manage both for your overall health. Your thyroid and blood sugar levels aren't isolated. They are part of a bigger picture that needs your attention. So if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more health discussion on various topics. Until then, stay informed, stay healthy.